Hello, Meghnaranji, Yashvinderji. I think we can start turning on our cameras and maybe we'll wait for the next 3 minutes and we'll start. Um, I think there are 10 attendees now. So let's wait for 2, 3 minutes more and then we can sort of start with the proceedings. Gatishil, is everything in order with the live stream and all? Yes, we are live. Let's go. Okay, great. Okay, so let's just wait for 2, 3 minutes. So, yeah. Will I will I Yeah. be showing my slides myself or I'll be sharing the screen. okay? All Yeah. right. Okay. I think it's 4 o'clock. So I think we can start, and then as in people trickle in, then we can sort of take it as it goes. Okay. So we'll start in uh, now. Okay. Hello. Welcome to today's webinar by the National Consortium for Multilingual Education, India. Thank you all for joining us today. This is our second webinar in the series. And while we looked at teaching pedagogy in the first webinar, in a keynote delivered by Dr. Sang Sok San from SIL Global, the idea of translanguaging pedagogy and its practice in multilingual classrooms was put on the spot for our critical faculties. In today's session, we'll turn the gaze on the individuals who would take such pedagogies to the classroom, the teachers, and the processes through which they are capacitated with the emerging context of multilingual education. As you must have been aware, the current National Education Policy, NEP 2020, and the National Curricular Framework, NCF 2022, place an increased emphasis on the inclusion of children's home languages in the formal education system to improve the foundational literacy and numeracy skills of the children. And research shows that this inclusion provides significant gains in not just literacy levels, but also the social emotional learning of a child. But in a country as linguistically diverse as India, implementing a policy push towards the inclusion of the various languages that are spoken across the country takes different forms, right? So one of the key pillars in sort of making sure that this program is implemented in the most effective way is the training of teachers and the capacity and the process of capacitating them to effectively transact a multilingual classroom, as well as to devise strategies to sensitively include children's languages in a holistic manner. When we say sensitive inclusion of children's
languages in a strategic manner, we mean that the inclusion doesn't happen as sort of a tokenistic move, or it doesn't happen as an exoticization kind of a move, but happens within the curriculum that is set, within the context of the subjects being taught, and with very clearly defined ways to sort of improve the learning objectives, right? So understanding how the capacity building process works for teachers to sort of take these sort of new approach to pedagogy is very crucial to the implementation of the vision of the national education policy with respect to multilingual education. And towards this end, we have with us three eminent speakers to discuss the various challenges and strategies for teacher training and capacity building. I will now proceed with giving a very brief introduction to of the three speakers that we have with us today, and then we'll sort of proceed to the keynote opening remarks by the speakers, and then we'll proceed to a moderated discussion, after which we will take a Q&A session. Okay. So the first speaker for us today is Professor Ramanujan Meghanathan from the National Council of Educational Research and Training. Hello. So Meghanathan is currently a professor of language education in the Department of Education in the Languages and the head of the Department of International Relations Division, NCRT. He is a curriculum and materials developer, teacher trainer, and language and education policy researcher. He has published in the fields of education and English language teaching, language classrooms, multilingualism, and multilingual education. Additionally, he has developed around 250 videos on English language teaching, pedagogy, and multilingualism for learners and teachers. We're very glad to have you with us today, and we'll hear more from him. Thank you so much. The second speaker that we have with us today is Yashvendra Singh Rawat. Yashvendra Singh Rawat. He is the director of India Partnership for Early Learning, IPEL. Yashvendra Singh Rawat has been working in the field of education for over 20 years. His experience ranges from serving as a teacher to becoming a teacher trainer, and now he is currently fulfilling the role of the director in the India Partnership for Early Learning. He's worked on various aspects of the educational framework, including the structuring of subjects, the processes of delivery of these subjects, and the sort of the preparations and the background work that goes into it, as well as the expectations from the teacher education system and how can it be improved in significant ways. He has a particular interest in understanding the various elements related to the teaching of mathematics at a foundational level. Welcome, sir. We are very glad to have you as well. Hi. The third speaker is Smriti Mishra. She's the Senior Program Manager in Emily from the Language and the Learning Foundation. Smriti has a dual master's in education and broadcast journalism, and she leads the Emily unit at Language and Learning Foundation. She has been working in the education field for the last 15 years, and her expertise ranges from supporting teachers' professional development to creating effective education content and overseeing comprehensive assessments for students and educators. Passionate about social justice and equity, Smriti also enjoys traveling, singing, and reading, and her work reflects a deep commitment to fostering a just and equitable society through education. Welcome, Smriti. Hi. Without spending too much time on me sort of going about the structure, we'll pass on the mic to our speakers in the order that we mentioned. But before that, I would like to request the audience to post their questions and queries or comments that they have about the webinar or anything that they would like the speakers to address in the chat box or in the Q&A box. You have two boxes in front of them. You can use either of them. And we'll collate those questions. And in the Q&A session, we will sort of try to put those questions forward to our panelists. Okay. So with that being said, let's proceed to the opening remarks. So I'd like to invite Professor Meghanathan to please go ahead with his opening remarks as I present his slides. Thank you, Arnav, and my welcome to my co-panelists and also the participants, and thanks to Language Learning Foundation for this opportunity. This is implementing multilingualism in the context of teacher education. I was trying to reflect on how it could be seen
multilingualism in the Indian context, which is definitely different from the Western multilingualism, because our multilingualism is a societal multilingualism. Our society is multilingual rather than it's not only academic context or professional context multilingual, which is in most European cases, and also they are increasingly multilingual otherwise due to migration. Now, let me begin with whether we have an understanding of multilingualism in school education particularly, so also in education in general. So how do we understand multilingualism in the teaching learning context, and whatever be the context? Uh, and I would like to see multilingualism from the policy perspectives, implementation, practice-based understanding, as also research. So let's find some of the dimensions or aspects of multilingualism, which is essential for understanding from curriculum developer to classroom teacher. So first and foremost is multilingualism as philosophy. So which is having an understanding, developing an understanding. Language plays a pivotal role, an instrumental role in learning and the cognitive development of the learner during the formative years, and it continues till the end of this life. And the second is, as I said, Indian multilingualism is societal multilingualism, social multilingualism, which means almost all Indians are bilinguals at least. And if they know two or more languages, otherwise they know one language very well, of course, was first language, mother tongue, and another language to some extent. So how does this takes us to multilingualism in language in education policy? So, in understanding multilingualism as language in education policy, the first and foremost question: how many languages? So, in this, how many languages differ in different language situations, which I will come to. And then, fine. How many languages in school and which stage? So that is the second question. Then we have been saying last 50, 60 years, mother tongue based multilingualism as the overarching language in education policy. All children should begin their schooling in their mother tongue and move on to add more languages. So then the next one, can you move? Yeah. So fine. We have having accepted multilingualism as a philosophy and policy. So I need to look forward to the resources, making use of the languages themselves as resources, rather than looking for other materials in the languages. So like now multilingualism is a resource. Then the foremost thing is multilingualism as pedagogy. How will I make use of this is in the context of classroom school, as also the curriculum developer. How can we promote the languages of children by making use of the languages of children? Now we talk about bilingualism as a method, multilingualism as a process, and translanguaging, so on and so forth. But whether the teacher understands in all these dimensions is a question we need to understand, answer from curriculum development, policy development to implementation, and particularly in teacher education. Next, next. Yeah, then this makes me takes me to when we plan for a language education in for any kind of children, whether children from belonging to minor tribal communities, or any children like a normal, when only one language prevails or two languages. So we need to, I was envisaging, I was trying to think about what are the situations in which we need to plan accordingly. I'm able to see a 7 kind of situations without taking much time. So look at the language situation 1. It mostly like the northeastern states of India, Nagaland, Manipur, Tripura, those states, and there are many tribal languages, and in one state there is no majority language. Then we need to plan accordingly. Then comes this the language situation 2, that Hindi heartland, one language, and mostly Hindi or Urdu like languages, one pan-Indian language, and there are minor languages. Then how will you do that? Then plan for that. Then situation 3, which provides like Jharkhand, Chhattisgarh like states,
So there are many tribal languages in one state and one majority language also. For example, Chhattisgarh Hindi or Chhattisgarh is a majority language. In Jharkhand also, the same way Andhra Pradesh, Telugu is the language. There are many tribal languages. Then the situation 4. Can you, yeah, situation 4. Then we can say one state majority language with few minor tribal languages like Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Goa, Gujarat, many Indian states. Any state, Indian state can be brought in that, except those states I mentioned before. So situation 4. Then one majority state language and few this one tribal minor languages. Then situation 5. This prevails across the country. In every language is a minority language in the other state. For example, Hindi is a minority language in Tamil Nadu and Tamil in the heartland, vice versa kind of situation. So we need to plan to accommodate those languages also. Then the other one is the border bilingualism, multilingualism, state border. For example, let me take the example of Tamil Nadu, Kerala. The Coimbatore district will have Malayalam as well as Tamil. And the same way, the Karnataka, Maharashtra, and Gujarat, Maharashtra, Marathi and Gujarati. So then situation 7 is the urban multilingualism. Cities like Delhi and even semi-urban places where you'll find due to migration or already pre-colonial, pre-independent settlements. So we have many languages. Delhi is the classic example. You will have Punjabi, Tamil, Telugu, Bengali. They also run schools. So in that case, the 7 situations warrant for a planning in a different manner, even though it is multilingual education. So this is how. Now the questions are, I would like to throw for this discussion. Yeah, can you move? Yeah. Yeah. How do we understand multilingualism itself as a philosophy, as a policy, as a resource and pedagogy? Is it at one level, at the rudimentary level, elementary level, people understand multilingualism as multi-language teaching or parallel monolingualism? This you will be seeing that even the policy when we talks about multilingualism, people express doubts whether it understands teaching of languages separately. Even our foundational literacy in curricula needs to understand it deeper to say how do we teachers teach languages in tandem, in together is the question. This then okay, people say that translanguaging would work. How would it work? Is it European multilingual education, the translanguaging, as there are some great scholars propose now? So is it 2 or more languages? Then let us take the example of Nagaland, Arunachal Pradesh. There are 7, 8 languages. How do I accommodate that? So we need to really develop an Indian model based on the societal multilingualism. The last one, which everybody knows, every policy from 1968 till now, the slash has a new meaning in language policy. So how to slash that slash is the question. We have got mother tongue slash home language slash local language, regional language. Now many more new novel terms are invented and used. That itself says that there's a convenient way of escaping mother tongue. So can anyone, the classroom teacher understand, teacher education curriculum, pre-service curriculum for that matter, understands seriously how to focus it and whichever the language of the child that is used in the classroom. Thank you very much. I'll stop it there. Yeah. Okay. Thank you so much for the keynote address. Yeah, it does raise very pertinent question. I think the key questions that are sort of thrown into the hat for the next panelist sort of discuss in the moderated discussion is sort of understanding us of what do we mean when we say multilingualism in the context of teacher training, right? Do you understand it as a resource? Do you understand it as pedagogy, or do we understand it as a cultural phenomena, right? And I think the other interesting point that Professor Meghnad just enumerated regarding like a lot of the policies when they push for multilingualism or push for multilingual education often end up in
due to various factors, sometimes have the jeopardy of ending up in a situation of parallel monolingualism, right? Where languages are not coming together as the translanguage model as well. So yeah, those are very pertinent questions. I think we'll come around to those questions in the moderated discussion, and keep that thought in our mind as we invite the second speaker, Yashvendraji, to sort of put forward their opening remarks. Thank you so much. Thank you so much, Arunab, and thank you, Meghanathan जी. आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत सारी बातों को सवाल करते हुए रख दिया है और वो पूरे देश के सवाल है. So I would request Arunab, if you can project the first slide only, that will be helpful. The next slide, right? Next slide, yeah. Yes. So इस प्रोजेक्ट में काम करते हुए मेरे को 2.5 साल हो गए, लेकिन इससे पहले भी जब मैं काम कर रहा था पिछले 20 सालों में, ऐसा कभी लगा नहीं कि मल्टीलिंगुअलिज्म एक ऐसी चीज है जिसको कि आज बात जिसको करनी चाहिए. वो हमेशा से ही उतनी ही हमारे लिए वैलिड थी, उतनी ही हमारे कंसर्न थे जितने की आज की डेट में. तो कुछ चीजें हैं जिनको कि हम लोग मानते हैं, लेकिन शायद हम उन पे विचार नहीं कर पाते बहुत ज्यादा, और आगे हम नहीं बढ़ पाते. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग इस बात को तो मानते हैं कि द चिल्ड्रन कम टू स्कूल विद देयर होम लैंग्वेज, एंड मेनी अ टाइम्स इट इज नॉट द लैंग्वेज, इट इज लैंग्वेजेस, more than one language, maybe the father, the mother, right, the neighbors, all of them having a different language, and they converse with the child. वो उससे अलग अलग लैंग्वेज में बात करते हैं, अलग अलग तरीके से बात करते हैं, और बच्चे के सामने पूरे कॉन्टेक्स्ट होते हैं. So many a times one child is having more than one language context, right? So एक तो ये चीज है. दूसरा ये है कि हम ये भी मानते हैं, इसी से लिंक बात की, 2 to 6 years का एक जो पूरा पीरियड होता है ईयर्स का, इसमें बच्चे ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेजेस को ग्रास कर पाते हैं, वो उसको सीख पाते हैं. और अभी मैं ओरल की बात ज्यादा कर रहा हूँ, ओरल लैंग्वेज की. इंडियन कॉन्टेक्स्ट को अगर हम देखते हैं तो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन को लेकर कॉन्क्रीट हमारे पास, अगर हम रिसर्च कहें, गुड रिसर्चेस कहें, तो उनका बड़ा अभाव देखने को मिलता है. अभी बहुत ज्यादा मल्टीलिंगुअलिज्म को, बायलिंगुअलिज्म तक का कुछ एक्सपीरियंस कहीं कहीं देखने को मिल जाता है, बट मल्टीलिंगुअलिज्म, या जिसको मेघनाथन जी कह रहे थे कि एक पैरेलल मोनोलिंगुअलिज्म का एक पूरा जो कॉन्सेप्ट अभी उन्होंने रखा है, वो थोड़े बहुत देखने को मिल जाते हैं, लेकिन मल्टीलिंगुअलिज्म को लेकर कुछ रिसर्च उस तरीके से देखने में भी नहीं आती. इसी के साथ हम इस बात को भी समझते हैं कि multiple languages, learning of multiple languages are two related things, but they are different concepts. For example, somebody has marked in the Q&A that English को teach करना है तो फिर कैसे करेंगे? So learning of English, teaching of English, and learning and teaching of other language, the first language or second language, and English as third language or fourth language maybe. So languages are there, but every language has a different construct, right? So we need to understand, and we understand that we mention in various theories too, right? If you look at the teacher training programs, we find that we understand that our country is multilingual. I can say I belong to Uttarakhand, and you go to any hilly area and you will find change in the language after every 1 kilometer of distance, right? So this is the range. And after every 10 kilometers, you will not be able to understand their vocabs to a certain extent. So this is the context, right? And we are now talking about all these things, right? You mentioned about the policy documents, Aruna. So our policy, again, as Meghnathan ji said, it is not for the first time that we are talking about multilingualism. Most of the policy they promoted, they use various terms, slashes, right? But the situation is there only. So today I would like to discuss, I would like to push few things from the teacher capacity, from policy, from implementation perspective,
So my whole discussion will be around that, and I hold myself till then. Thank you. Okay. Thank you so much. Yeah, I mean, as both of the panelists have just said, like it is the question of multilingualism or the question of different languages has been something that this subcontinent has been grappling with ever since its inception, I'd say. And particularly as to sort of the formal inclusion of these languages and the politics behind it, which language gets included, which language doesn't get included, and all of the things that Jaswinder ji was mentioning about how the language keeps on mutating every few kilometers. So, and when again the politics around it happens of inclusion of languages, where are the gaps in sort of looking at those kinds of languages as well, right? So yeah, the linguistic context of India is quite diverse in that way, and also quite challenging, so to say. Then when we have in a state, not even in a country, even in a state, when we have a set curriculum or a set found like learning objectives and learning goals that are set by the education board, et cetera, et cetera. And the teachers are expected to sort of follow a standardized achievable outcomes in certain capacities. So how do we sort of then sort of implement a kind of a multilingual um, approach where the language shifts from one block to the other? So the strategy is then going to be very different because of the language situation that differs from block and block. I think that's a pertinent question that arises out of this context as well. Thank you so much, Yashwendraji, for sort of putting all of these in a very succinct way. I'd now like to invite our third keynote speaker, Smriti, to sort of present her opening remarks. Thank you so much. Thank you, Arnav, और thank you, मेघनादन and यशवेंद्र जी. मैं बेसिकली आप दोनों की बातों से ही जोड़ना चाहूंगी. बेसिकली जो आपने कहा कि भारत में एक डाइवर्स लैंग्वेज सिचुएशन है, बहुत जगह पे भाषाएं बदलती हैं, बहुत जल्दी जल्दी बदलती हैं. मेघनादन जी ने भी कुछ लैंग्वेज सिचुएशंस की बात की कि किस तरीके के लैंग्वेज सिचुएशंस हम इंडिया में देख पाते हैं. तो यहाँ पे जो मैं बात करना चाहूंगी वो ये है कि जैसे हम बात करते हैं कि किस तरीके की लैंग्वेज सिचुएशन है, तो इन LLF लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन हम लोगों ने जहाँ पे भी मल्टीलिंगुअल एजुकेशन प्रोग्राम को कंसेप्चुलाइज किया है या वहाँ पे जो भी चीज़ें की हैं, तो उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि हम उस एरिया के या उस जगह की लैंग्वेज और वो भी क्लासरूम के अंदर के लैंग्वेज सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं. तो उसमें बहुत तरीके की चीजें होती हैं, जिसमें एक जो चीज है वो ये है कि हम स्कूल बेस्ड लैंग्वेज मैपिंग एक्सरसाइज करते हैं. और ये हमने छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मिलके, राजस्थान गवर्नमेंट और रिसेंटली अभी हमने झारखंड गवर्नमेंट के साथ भी इसको एग्जीक्यूट किया है, इस लैंग्वेज मैपिंग एक्सरसाइज को. तो इस क्लासरूम लैंग्वेज मैपिंग, स्कूल बेस्ड लैंग्वेज मैपिंग का जो मेन कंपोनेंट होता है वो चार चीजें हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे होते हैं किसी क्लासरूम के अंदर. कि एक तो बच्चों का L1 क्या है उस क्लासरूम में, जो वो अपनी होम लैंग्वेज या जो L1 है उनकी प्रथम भाषा है वो क्या है. दूसरा हम बात करते हैं कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चल रहा है उस पर्टिकुलर स्कूल में या उस पर्टिकुलर एरिया में, उसमें चिल्ड्रंस लेवल प्रोफिशिएंसी क्या है, मतलब बच्चे उसको कितना समझ पाते हैं, कितना बोल पाते हैं. तीसरी चीज जो हम यहाँ पे करते हैं वो ये है कि टीचर्स प्रोफिशिएंसी क्या है बच्चों की भाषा में. जो भी बच्चे L1 जिस भी भाषा के हैं, तो टीचर्स उसको कितना बोल पाते हैं, कितना समझ पाते हैं. और एक हम इस एक्सरसाइज के थ्रू ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्लासरूम में अगर दो या दो से ज्यादा L1 वाले बच्चे हैं या प्रथम भाषा वाले बच्चे हैं, तो क्या कोई लिंक लैंग्वेज एग्जिस्ट कर रही है वहां पे जिसको बच्चे और टीचर दोनों ही तरीके से दोनों ही समझते हैं और बोल पाते हैं. तो ये एक्सरसाइज जो है वो 3 स्टेट के साथ किया गया, और मैं अपने ओपनिंग रिमार्क्स में इसके कुछ डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूंगी. तो छत्तीसगढ़ में जब ये बात हुई तो ये समझ में आया कि अच्छा, इस लैंग्वेज मैपिंग एक्सरसाइज के थ्रू हम जो है वो टाइप निकालते हैं कि किस तरीके के टाइप हैं वो स्कूल, और वो इन 4 कैटेगरीज में बेसिकली बढ़ते हैं. तो टाइप 1 ऐसा है जहाँ पे स्टूडेंट जो हैं वो कोई एक ऐसी भाषा बोलते हैं जिसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन से थोड़ा सिमिलैरिटी है. टाइप 2 ऐसा होता है जहाँ पे स्कूल लैंग्वेज या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है उस पर बच्चों की लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग होती है, बच्चे एक ही भाषा परिवार से आ रहे होते हैं और टीचर जो है उस बच्चे की भाषा को समझ रहे होते हैं.
टाइप 3 में बाकी दो चीजें कॉमन होती हैं, बट तीसरी चीज जो बदल जाती है वो ये कि टीचर जो है वो अपने बच्चों के घर की भाषा को नहीं समझते हैं, नहीं बोल पाते हैं। और चौथा सिचुएशन होता है जिसमें दो कैटेगरी है 4A और 4B का, जिसमें मल्टीपल लैंग्वेज बोलने वाले बच्चे हैं, मल्टीपल होम लैंग्वेजेस हैं क्लासरूम में, मोर देन 2 लैंग्वेजेस। और वहां पे या तो कोई लिंक लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है जिसको बच्चे समझते हैं, टीचर समझते हैं, और या तो कोई लिंक लैंग्वेज एग्जिस्ट नहीं करती है। और इस तरीके के सिचुएशन में हम चले जाते हैं। तो फॉर छत्तीसगढ़ जब हम देखते हैं तो छत्तीसगढ़ का डेटा हमको बताता है कि हमारे पास टाइप 2 के तहत जो है वो लगभग 69% स्कूल्स आते हैं। ये स्टेट वाइड डेटा था, जिसमें टाइप 2 का मतलब है कि बच्चे किसी एक भाषा से आते हैं जो कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन से अलग है। उनकी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पे समझ काफी सीमित है, और टीचर जो हैं वो बच्चों के L1 को बोल पाते हैं, समझ पाते हैं। तो ये एक ग्राफ आपको दिख रहा होगा। टाइप 1 में स्कूल जो हैं वो हैं, टाइप 1 में 21% स्कूल आते हैं। टाइप 3 की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे भी कुछ परसेंटेज का स्कूल है। टाइप 4 और टाइप 4B में भी ये चीजें हम देखते हैं। सिमिलरली यही एक्सरसाइज जब हमने राजस्थान गवर्नमेंट के साथ की है तो इसका जो पूरा डेटा ये बताता है कि इसको हमने दो तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट किया है कि एक तो टीचर्स प्रोफिशिएंसी क्या है बच्चों के L1 में, तो वो हम देख पाते हैं कि सिर्फ 51% टीचर्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों के घर की भाषा को अच्छी तरीके से बोल और समझ पाते हैं। और ये अराउंड 50% टीचर्स ऐसे हैं जो कि बहुत कम बोल पाते हैं, या थोड़ा या उनकी बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग या स्पीकिंग कैपेसिटी नहीं है। दूसरा, अगर हम टाइपोलॉजी में बात करते हैं तो ये इस तरीके का ग्राफ आप देख पा रहे हैं कि टाइप 2 में अगेन हमारे पास यहाँ पे 21% स्कूल्स आ रहे हैं। यहाँ पे टाइप 3 का जो डेटा है वो भी एक बड़ा नंबर आ रहा है कि 18% स्कूल जो है वो टाइप 3 में आ रहे हैं राजस्थान में, जिसका मतलब ये है कि यहाँ इन 18% स्कूल्स के टीचर्स को अपने बच्चों का L1 नहीं पता है। और टाइप 4A जो है वो भी एक बड़ा नंबर आपको यहाँ पे परसेंटेज दिख रहा है जो 33% है। इसका मतलब है कि राजस्थान के 33% स्कूल्स में एक भाषा से ज्यादा भाषा बोलने वाले बच्चे वहाँ बैठे हैं, दो से ज्यादा भाषा बोलने वाले बच्चे बैठे हैं। और टीचर और बच्चे जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए काफी स्ट्रगल वहाँ पे कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, झारखंड में जब हमने किया, ये एक्चुअली 7 डिस्ट्रिक्ट का ही डेटा है, तो इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ स्कूल्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम दिख रहे हैं। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि हमारा जो टाइप 3 है वो यहाँ पे भी 34% है। इट मीन्स कि 34% स्कूल्स में जो है वो टीचर और बच्चे की भाषा आपस में वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं, नहीं समझ पाते हैं। और टाइप 2 जो है वो 21% स्कूल है जहाँ पे स्थिति थोड़ी बैलेंस है। यहाँ पे इस्तेमाल करने की बात होती है कि टीचर को किस तरीके से कैपेसिटेट किया जाए कि वो बच्चे की भाषा को अपने क्लासरूम में इस्तेमाल करे। तो ये एक मोटा जो लैंग्वेज सिचुएशन को क्लासरूम के अंदर समझने का जो प्रयास है वो इस तरीके से हमने कुछ डिफाइन करने की कोशिश की है। और जैसे मेघनादन जी ने अपने अपने स्पीच में कहा था कि लैंग्वेज सिचुएशन को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और क्योंकि भारत में बहुत डाइवर्स लैंग्वेज सिचुएशन है, तो ये एक प्रयास है जो कि 3 राज्य सरकारों के साथ मिलकर ये किया गया है। एंड इसके ही अराउंड जो है वो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, बहुभाषी शिक्षा की रणनीतियों को बुना जाता है। तो हम इसके ऊपर और भी आगे बात करेंगे, और इसके साथ मैं अभी अपने आप को रोकूंगी। और थैंक यू अरुणव, हम और कुछ सवाल पे बात कर सकते हैं। Yeah, thank you so much. So I think that the last three sort of keynote speeches sort of really sets the context for it, when on the one hand, where we have the introduction to some familiar terms like Emily, L1, what is the school typology, etc., etc. So we also set up in Meghnadan this speech, we sort of get around the theoretical level and also the policy level groundwork or the context for multilingual education as it has been happening since long back, since a couple of decades. To say in the Indian context, we also understand how the practicalities of that
just so there's a push and pull between the policy ideation and the policy implementation in the context that was set by Yashvinderji. And as Smriti just displayed, the various linguistic diversity that we sort of often quote of India being having, we sort of quantifying that linguistic diversity and how that sort of makes the transition from a monolingual approach to education to a multilingual approach to education even more difficult. Now, understanding this context of multilingual education, I think we can sort of look forward to the moderated discussion, and we'll sort of begin with the first question, saying that within the ambit of this context of how and what an MLE should be or MLE has been, or why MLE is difficult in this country, how can the sort of the current teacher training programs, both in-service teacher training programs, B.Ed, DLED, ITEP, or the pre-service programs and the in-service programs, both of them can be tailored to sort of better equip teachers for multilingual settings? If anybody would like to address this question. Yes, Vinderji. So, Aruna, it would be helpful if you can display the slide. Yes, 1 second. Slide 3. Just a second, I'm so sorry. Yeah, maybe you can begin speaking. I will just display the slide. Yeah, it's up. Yeah, thank you. तो पहली बात तो ये कि जब हम इसको लेकर पूरी की पूरी बातचीत कर ही रहे हैं और टीचर्स की बात कर रहे हैं और हम मान रहे हैं कुछ चीजों को कि फाउंडेशनल लेवल भी कुछ होता है, तो उसमें अगर हम देखें तो ये जो एज ग्रुप, इससे पहले जो मैं बात कर रहा था कि कई रिसर्चेस इस बात को इस्टेब्लिश करती हैं कि 2 to 6 इयर्स में बच्चे मैक्सिमम लैंग्वेजेस जो उनके सराउंडिंग में होती हैं, जिनके उनको मौके मिलते हैं, जिनका उनके सामने एक पूरा का पूरा एनवायरनमेंट क्रिएटेड होता है, तो वो उसको सीखते हैं, उनको समझते हैं, उस पर वो बात करना, उस पर सोचना शुरू करते हैं। लेकिन अभी अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो हम लोग जब अभी की पॉलिसी के हिसाब से देखें तो फाउंडेशनल लेवल डिफाइंड है, इट इज फ्रॉम 3 to 8 years of age, राइट? और इस फाउंडेशनल ईयर की जब हम बात करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इट हैज मल्टीलिंगुअलिटी इंटीग्रेटेड इन दैट, राइट? क्योंकि हमने इसके पहले जो प्रीमाइसेस की बात करी थी उसमें हम ये बोल ही रहे थे कि बच्चे अपने साथ बहुत सारी भाषाओं को लेकर आते हैं। अभी कुछ कंसर्न्स को अगर हम समझने की कोशिश करें तो 3 to 8 years का अभी करंट कॉन्टेक्स्ट क्या है किसी भी स्टेट में, तो हम ये देखते हैं कि 3 to 8 years एक्चुअली 2 हिस्सों में बटा हुआ है, 3 to 6 and 6 to 8 years। 3 to 6 years को अगर हम देखें तो वो ICDS या WCD डिपार्टमेंट के पास दिखता है और 6 to 8 हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के पास दिखता है। तो अभी एक बड़ा चुनौती जो देखने में आती है वो ये है कि ये 2 डिपार्टमेंट्स का एक पॉलिसी के अम्ब्रेला के अंदर आना और एक साथ मिलकर थोड़ा सा बच्चों के बारे में सोचना और काम करना। इफ यू सी, अगर हम देखें कि बच्चे जो हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स में आने वाले जो बच्चे होते हैं, है ना, उनके साथ बात करने वाली जो आंगनवाड़ी वर्कर्स जो होती है ना, उनकी सहायिका जो होती है, ज्यादातर उसी भाषा में बात करती है जिस भाषा में के वो बच्चे आमतौर पर होते हैं, है ना। लेकिन उनकी खुद की वो कैपेसिटी, वो ट्रेनिंग और उसको लेकर उनके साथ लगातार काम करना ताकि वो उन बच्चों को बाकी भाषाओं में भी उतनी ही मदद कर पाए जितनी वो उनकी खुद की भाषा में उनके साथ मदद कर पा रही है। ये एक बड़ी बड़ी अभी की विडंबना है हमारी, है ना। अभी अगर हम देखें, इसी को देखें कि भाई ट्रेनिंग नीड को देखते हैं तो कितने ट्रेनिंग्स ऐसी होती हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की हो या किसी ICDS डिपार्टमेंट की हो। ICDS डिपार्टमेंट को अगर आप देखें तो आंगनवाड़ी वर्कर्स की एकेडमिक ट्रेनिंग को हुए तो मैं अगर ये बोलूं कि दशक हो गया है तो वो अपने आप में बहुत बड़ा कोई बात नहीं होगी। 7 से 8 साल हो गए हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर्स का कोई एकेडमिक ट्रेनिंग हुआ कि उनको बच्चों के साथ कैसे काम करना है। आप उसमें से उनको न्यूली रिक्रूटेड को अगर हटा दें तो उनका अभी तक का जो पूरा का पूरा मामला वो इस तरीके से, उनकी ट्रेनिंग ही नहीं है ना। हम यहाँ पर अगर देखें
कि जब हम कहते हैं कि नीड बेस्ड ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो अगर हम डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की बात देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर भी हम नीड का मतलब क्या समझते हैं, किसकी नीड, और वो नीड कौन रियलाइज करेगा। मैं जो यहाँ पर बैठा हूँ, क्या मैं एक किसी खास कॉन्टेक्स्ट के लोगों की नीड को यहाँ बैठ के रियलाइज कर रहा हूँ और कुछ डिजाइन कर रहा हूँ, या वाकई में मेरे पास कोई तथ्य हैं जिनके आधार पर मेरे पास नीड निकल के आई है और उस नीड को कैटर करने के लिए मैं कुछ तैयारी कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। तो ये किसकी नीड है और क्या वो रियलाइज है कि नहीं। किसी टीचर को क्या ये ऐसा लगता है कि उनको वाकई में अपनी क्लासरूम में उस मल्टीलिंगुअल सिचुएशन को डील करने में समस्या है, क्या वो आर्टिकुलेट कर पा रही है, क्या उनको वो लग रहा है। अगर उनको लग रहा है तो उसको समझने की हमारी क्या प्रक्रिया है, उस नीड को निकालने की। तो ये एक अपने आप में है। प्री सर्विस को अगर हम देखते हैं तो आंगनवाड़ी वर्कर्स को अगर आप देखें, अभी जो 3 to 6 years को कैटर करते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन को अगर आप देखें तो कहीं आपको 8th भी मिलेंगे, कहीं आपको 10th भी मिलेंगे, कहीं आपको 12th भी मिलेंगे। उनकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को अगर आप देखेंगे तो वो उस तरीके से देखने में नहीं आती। तो अभी मैं तो ये कहूंगा कि इतने सालों के बाद इस पॉलिसी में ये कहना कि फाउंडेशनल का मतलब 3 to 8 years को एक साथ देखना है, हमको इसको कहने में इतने साल लग गए, है ना। इसके रियलाइजेशन हमारे इतने साल लग गए, तो अब इसको बरतने में तो थोड़ा और समय चाहिए होगा, क्योंकि इसको बरतने का मतलब उससे पहले समझना होगा। तो ऐसे ही अगर हम देखें तो मेंटरिंग को देखते हैं, अगर हम कितने मेंटरिंग प्रोसेस हमारी है, कौन वो लोग हैं जो कि मेंटरिंग करते हैं, किस चीज पे मेंटरिंग करते हैं, क्या जो मेंटरिंग के लिए जाते हैं, अगर जाते हैं तो वैसे तो नहीं है, मेंटरिंग बहुत कम राज्यों में आपको देखने को मिलेगी, तो वो क्या उस मल्टीलिंगुअलिटी को देख पाते हैं अपने चश्मे से, क्या वो समझ पा रहे हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी में लेडी सुपरवाइजर्स हैं, क्या वो उनको मदद कर पा रही है कि वो कैसे उनको उनकी अपनी भाषा से बाकी भाषाओं की ओर भी लेकर जाए। तो ये एक अपने आप में समस्या है। कंटिन्यूटी को अगर हम देखें तो हमको लगता है कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए भाई, किसी का भी सीखना वन टाइम तो हो नहीं सकता। आपने किसी को 1 महीने के लिए ट्रेन कर दिया, किसी को 6 दिन की इन सर्विस दे दी, क्या ये अपने आप में सफिशिएंट है? और क्या उसमें आपने मल्टीलिंगुअल को इंटीग्रेट करा है कि नहीं करा है, ये एक अपने आप में मामला है। जहाँ कहीं बेहतर प्रयास होते हैं तो वहाँ किस चीज को हम फेलिसिटेट कर रहे हैं, किस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमारी प्रोसेस क्या है, वो सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे प्लीज। अगर हम देखें तो इसमें करने की क्या जरूरत है, भी जो पॉलिसीज भी कह रही हैं और जो हम लोग भी पिछले 3 सालों से लगातार कोशिश कर रहे हैं, झारखंड में, बिहार में, यूपी में, है ना, और अपना दिल्ली के एमसीडी में। तो हमको लगता है कि पहली बात तो ये कि ये जो रिक्रूटमेंट्स है, क्या ये ज्योग्राफिकल रेफरेंसेस को देखकर ध्यान में रख के किए जाते हैं, तो शायद अभी उसको सोचने की जरूरत है ना, क्योंकि रिक्रूटमेंट पॉलिसी और ट्रांसफर पॉलिसी को आप बहुत ज्यादा छेड़ नहीं पाते हैं, वो मसले पॉलिटिकली ज्यादा डोमिनेट होते हैं, तो इसीलिए उसमें थोड़ी समस्या रहती है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कि आप जिनको ले रहे हैं उनको कहाँ के ले रहे हैं और उसके लिए क्या उनकी तैयारी हो रही है। इन सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग को देखें तो इसमें 3 बेसिक चीजें हम लोग बहुत सिंपली देखते हैं। एक तो हम कहते हैं कि उसमें ट्रेनिंग नीड को समझना है, उसका डिसेंट्रलाइज होना है और उसमें कॉन्टिन्यूटी का होना है। अब जब हम डिसेंट्रलाइज कह रहे हैं, ट्रेनिंग नीड के ऊपर तो हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन डिसेंट्रलाइज जब हम कह रहे हैं तो किस लेवल तक उसका डिसेंट्रलाइजेशन देखना है। क्या कोई एक डाइट, झारखंड की एक डाइट, कोई बिहार की डाइट अपने आप में क्या ये कह सकती है कि अच्छा इस बार की जो इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग है, इसमें जो लैंग्वेज के सेशन ऊपर से नीचे आ रहे हैं, जिनमें मेरे को 9 घटक भी पढ़ाने हैं, है ना, वो जो पूरे के पूरे एनईपी का अपने को ब्लॉक पद्धति भी पढ़ानी है, तो क्या मैं इसको कॉन्टेक्चुअलाइज करूं अपने यहाँ? क्या मैं इसको देखूं कि मेरे कौन कौन से रीजन हैं या पॉकेट्स हैं जहां पर मेरे को इसको मल्टीलिंगुअल के नजरिए से देखने की जरूरत पड़ेगी? तो ये जो लेवल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन है ये अभी मिसिंग है, तो इस पे हमको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। क्या हम लोग कॉन्टिन्यूटी के नाम पे क्या हम कुछ कोर्सेज ऑफर कर पा रहे हैं टीचर्स को? अब कोर्सेज ऐसे नहीं कि आपने कोर्सेज अपलोड कर दिए एंड आपने चिट्ठी निकाल रहे हैं कि अच्छा ये कोर्स करने आपके लिए मैंडेटरी है, नहीं,
नीड, अगेन द कोर प्रीमाइस इज द नीड। टीचर अपनी नीड रियलाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनको वो चिंता है कि नहीं। कितने कोर्सेज अपलोडेड हैं जो कि मल्टीलिंगुअल एजुकेशन को लेकर उसको केटर करते हुए दिखते हैं। इस पे हमको इम्प्रूव करने की जरूरत है। इस पूरी की पूरी इन सर्विस को कॉन्टिन्यूटी में लाने की जरूरत है। जैसे अभी हम वेबिनार पे बातचीत कर रहे हैं, तो इस वेबिनार में कितने टीचर्स होंगे, कितने आंगनवाड़ी वाले होंगे जो इसको सुनने समझने की कोशिश कर रहे होंगे। तो शायद उस तरफ भी जाने की जरूरत है ना। आपस में तो हम लोगों की बातचीत अच्छे से चलती चलती रहती है। कैपेसिटी बिल्डिंग को अगर हम देखते हैं तो मेरे को लगता है कि प्रैक्टिकली कितना उसको हम कर पाते हैं। प्रैक्टिकली का मतलब अगेन मैं उससे आ रहा हूँ कि क्या हम ये देख पाते हैं कि कोई टीचर जो अलग रीजन से आ रहे हैं, अलग अलग रीजन से आ रहे हैं, अलग अलग पॉकेट से आ रहे हैं, कोई झारखंड में कुड़ुक से कुड़ुक भाषा को लेकर आ रहा है, कोई संथाली ला रहा है, कोई वो ला रहा है, तो क्या उनकी वो जो भाषाओं के पॉकेट्स हैं उसको कैटर करने के लिए हमने कुछ प्रैक्टिकली कुछ रखा है उनके लिए, है ना। तो सिंपली अगर हम देखें तो हम कह रहे हैं कि बच्चे की भाषा को समझना और बच्चे की भाषा में उसको आगे लेकर चलना, किसी भी बच्चे को, है ना, ये एक टीचर का जॉब है। इसमें हमको थोड़ा सा मदद करने की जरूरत है। और इसमें हम कहते हैं कि किसी भी टीचर को उस भाषा को सीखना तब तक जरूरी नहीं है जब तक कि उनकी खुद की भाषा और बच्चे की भाषा में बहुत ज्यादा गैप ना हो, है ना। इसके बाद अगर देखें, अगली एक महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें होता है रिसोर्सेस का। कौन से वो रिसोर्सेस हैं? क्या हम बच्चों के रिसोर्सेस को मल्टीलिंगुअल नजरिए से देख पा रहे हैं क्या? और जब मैं बच्चों के रिसोर्स कह रहा हूं तो कितने ऐसे रिसोर्सेज मौजूद हैं जो कि बच्चों की भाषा को डील करते हुए हों, जो मगही में भी उनको मदद कर पा रहे हों, है ना, जो बज्जिका में भी मदद कर पा रहे हों, जो भोजपुरी में भी मदद कर पा रहे हों। तो ऐसे कितने रिसोर्सेज हैं जो कि मौजूद है। शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस के अलावा की बात कर रहा हूं। शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में तो हो सकता है कुछ एक रिसोर्सेज मिल जाए, लेकिन उसके अलावा जो लैंग्वेजेस हैं जो बच्चों की अपनी भाषा है जिस पर हम बात कर रहे हैं, उसके लिए कितने रिसोर्सेज हम लोग बना पा रहे हैं। हैंड होल्डिंग, स्कैफोल्डिंग, इसकी मैं बात कर चुका हूँ। ठीक, प्री सर्विस का एक पूरा का पूरा लिंक, हमारी एनईपी और एनसीएफएफएस बहुत क्लियरली बोलते हैं कि हमको आंगनवाड़ी वर्कर को अब एक टीचर के तौर पे देखना होगा, उनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट को देखना होगा। क्या तैयारी है हमारी अभी? तो जब तक ये सारी चीजें इंप्रूव नहीं होंगी, जब तक हम आंगनवाड़ी वर्कर को एक टीचर के तौर पे नहीं डेवलप करेंगे, नहीं देखेंगे, क्योंकि वो वही खास दिन खास समय है जब बच्चों के साथ मल्टीपल लैंग्वेजेस का आदान प्रदान होना चाहिए और उनको वो सीखने के मौके मिलने चाहिए। अगर वो ही तैयार नहीं होंगे तो 3 से 6 साल का एक बड़ा समय उन बच्चों के सीखने का, समझने का अलग अलग भाषाओं को, वो चूक जाएगा। इसके आगे एक बार बढ़ेंगे थोड़ा प्लीज। तो मुझे लगता है कि टीचर ट्रेनिंग की जब हम बात कर रहे हैं इसके इम्प्रूवमेंट के लिए, ये सारी की सारी बातें हैं जिनको लेकर हमको एक देश के तौर पे, एक संस्था के तौर पे, एक व्यक्ति के तौर पे, एक टीचर के तौर पे, एक आंगनवाड़ी वर्कर के तौर पे अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। तो मैं इतनी बातें अंडरलाइन करना चाह रहा था टीचर ट्रेनिंग को लेकर। थैंक यू सो मच। Thank you. I think that sort of really puts the question, explores or sort of opens up the question in that context of understanding teacher training in the context of the need of the teachers, right? So I was just thinking in terms of when we say that we want to understand the need of the teacher and that it should be a decentralized process which comes from the teachers who are practicing, right? So they identify their own challenges and that those needs get articulated and then they get taken up as things that need to be part of trainings. Of course, the other or logistical issues of is there continuity, etc., those are there. But so are we then trying to sort of look at what the current trends in teachers' perspectives are on multilingual classrooms, right? So if when we say the need, so that need sort of comes from the teacher's perspectives on how the approach or the monolingual approach or the multilingual approach is sort of helping them or curbing them or causing difficulty or actually helping them in sort of transacting the classroom material, right? So
what do we think about the current trends in teachers' perspectives on multilingual classrooms or in multilingual classrooms, and how do these sort of perspectives are informing the development of both inclusive pedagogies and that are the current sort of training regime that is there? If you could sort of address that concern. Anybody? I mean, I'm opening the question. Yeah. Yes, Professor Meghnad. To me, is it to me? I mean, yeah, you can address all it. good. Okay, Yeah. I got it. Yeah. One is I have answered some of the questions which were asked by the people who are watching this. Interestingly, it also takes me back to what Dr. Yashwendraji has now in detailed manner and deliberated. It is interesting that two departments have come together, many things. Now, let me restrict myself to the pedagogical aspect, or inclusive pedagogy. The first and foremost, I will also recall what Smriti has pointed out in her presentation, that classroom situations themselves inform the sensitivity on the part of the teacher even before coming into pedagogy. So that's what that makes pedagogy inclusive is. I'm a teacher teaching in a minor tribal community language situations, so let me have a kind of critical language awareness, which what discourse analyst and pedagogues would call it. What is critical language awareness, which enables teachers to understand the situation? First of all, first and foremost, the critical question of how can I accommodate the languages comes from the question, the essential question: how should I accommodate the learner? So let me understand the learner, his context, his language profile, so that you are doing from your language mapping exercise and other activities. The a lot of inferences from Smriti's presentation also. So understanding the learner, we have different models of the pre-service teacher education, leave alone in service, which has some sort of what's that tokenism in all the sessions. There is one session on multilingualism happening. In pre-service, we have general pedagogical understanding, particularly to the what we call it that diploma, which is for foundational stage and primary up to class 5. And we have what is language, what is language learning takes place, mostly driven by second language pedagogy. That is one major maybe merit, and but at the same time misnomer, misunderstanding. And when children bring the language to classroom oral language from their community home, how come a second language, foreign language pedagogy is applied to that? That's one. So the teacher's understanding of the what we call teacher education specialist, pedagogical knowledge, pedagogical content knowledge of how learning takes place, how language learning takes place is one major question. And more than that is the critical language awareness, so that I understand the need of the child to make use of the language in the classroom. Then we have BLED and the four-year integrated course, and NCERT's BSc, BEd, BA, BEd courses, which do address the all requirements of an ideal teacher. Still, they lack the language aspect required for any teacher, leave alone the language educator, be it a first language, second language, Hindi or English or Tamil, whatever the language. That's why in after a lot of emphasis, we included language across curriculum perspective in the core aspects of pre-service teacher education after 2009 curriculum. Now all courses will be four-year integrated courses. It might take time. However, then one common core in the pre-service should be understanding language and language learning, which might address the multilingual learning. How is that someone who is termed designated as illiterate or semi-literate by the formal education system
is able to speak 2-3 languages in any urban setting or rural setting. My mother knew more than 2 languages, but in her credentials, she was not a literate person. So in that how that works is the understanding for multilingual pedagogy. So we have languages in the ambience within the child's home, and we have a pedagogy prescribed by, say, that was NCT or NCRT, whatever the textbook, and the designer methods, we call it designer pedagogies, which come from England or USA or Australia for second language pedagogy, particularly focusing on English as second or foreign language, which also have merits, which can be borrowed, which can be applied for this one. So this I would call all this as critical language awareness on the part of the teacher is essential in the pre-service, as also when someone gets into school situations where one finds that all that I have learned may not work in my classroom. That leads to frustration. We know, all of us. I did face that issue as a school teacher. So in that case, there is a social understanding of learning and social understanding of children, which will definitely lead to inclusive pedagogy. How can I make use of the languages of learners? It should be the only question in the mind of the teacher pedagogue when he or she stands before the classroom. This is not easy. I'm not taking Paulo Freire or Krishna Kumar or anybody else. For that matter, we can take anyone. So, but it is the sensitivity in the teacher. Then, for example, I was watching a teacher doing a multilingual storytelling. The story was first told in Hindi. Then there were about 5 languages. Children narrated the summary in their languages, then followed by English. Then I was thinking that, oh, this is exercising the imagination of children. So imagination itself is an exercise, but the multilingual teacher needs to really exercise the imagination of children. That enables the pedagogy inclusive. I think, yeah, fine. Thank you. Yeah. You are muted. Yeah, I'm sorry, technology has bested me again. So I was saying that one key thing that comes from sort of conversation that we are having is that uh, at least that the critical language awareness of the children's languages and the sociological setting of where the children are coming from, that is very crucial in sort of transacting the material that is whatever material that is there in the classroom, right? And that should, for sort of that understanding of language and the social understanding of the situations of the child, should inform the pedagogy, and that sort of goes long way into creating inclusive pedagogical apparatus and tools, etc. So in that understanding of critical language awareness, right, and in that understanding of the needs of teachers and understanding of the multilingual situation, there are a lot of myths, or there are a lot of misnomers, or there are a lot of common perceptions regarding multilingualism. As it was previously in our keynote speech, you observed about how sometimes multilingualism veers into the category of parallel monolingualism. And then again, as Jaswinderji was mentioning, how there has where when we say children's education, we are talking about 3 to 8, but the education of the children at a very the young age is actually managed by the Anganwadi centers, which are often not part of the public conversation around education, right? And again, the language situations in itself are very complex and critical, and there are a lot of myths and conceptions around it. So I just wanted to sort of push the conversation towards reflecting on the question of how do these myths and conceptions regarding multilingual education, teacher training, teacher preparedness, etc., play across in the current language situation across various states, right? And how can sort of our training programs address these sort of issues regarding all of these misconceptions? Yeah, and it's an open question. Who is answering, Smriti? Okay. Okay. Yeah, please. Yeah. Yeah. Yeah.
सो एक्चुअली जब हम बात करते हैं कि मल्टीलिंगुअल एजुकेशन में किस तरीके के मिथ्स या मिसकंसेप्शन है या लैंग्वेज लर्निंग को लेके भी जो चीजें हैं, तो सबसे पहले तो ये बात ही आ जाती है कि जब भी मल्टीलिंगुअल एजुकेशन या बहुभाषा शिक्षा की बात होती है, तो सबसे पहले यही बात आती है कि नहीं नहीं, ये हमारे बच्चों के लिए नहीं है, ये तो जो दूर कहीं आदिवासी एरियाज में रहते हैं या ट्राइबल एरियाज में रहते हैं, वहां के बच्चों के लिए बहुभाषा शिक्षा होती है। तो ये एक बहुत बड़ा एक कहना चाहिए कि एक एक धारणा है या एक मिथ है। और इसी में जो है, जब हम बात करते हैं कि लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि कई सारे शोध हैं जो बताते हैं। कैन यू प्लीज शेयर दैट स्लाइड नंबर 10, अरुणा? जो बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आदिवासी बच्चों के लिए ही है ये बहुभाषी शिक्षा। इसमें हम देखते हैं कि लगभग पूरे भारत में भी अगर हम बात करें तो अराउंड 25 से 30% जो बच्चे हैं वो स्लाइड 10, वो जो है लर्निंग डिसएडवांटेज को फेस करते हैं। और इसमें और इसका सबसे बड़ा रीजन यही है क्योंकि उनके घर की भाषा और स्कूल की भाषा जो है वो बिल्कुल अलग होती है। और इसमें जब हम बात करते हैं कि ये सिर्फ ट्राइबल लैंग्वेज या ट्राइबल हैबिटेशन के लिए नहीं है, रिमोट ट्राइबल हैबिटेशन के लिए, ये उन लोगों के लिए भी है जो जिनके घर की भाषा जो है वो किसी मानक भाषा या स्टैंडर्ड लैंग्वेज से थोड़ी डिफरेंट होती है। तो एक ये वाला भी एस्पेक्ट है इसके अंदर। दूसरा, जैसा कि मेघनादन जी ने और यशवेंद्र जी ने बात की थी कि कई सारे ऐसे एरियाज हैं जो इंटर स्टेट बॉर्डर एरियाज पे जो लोग रहते हैं या जो परिवार रहते हैं, उनके बच्चों के साथ भी ये दिक्कत होती है कि वो इस तरफ की भाषा बोलें या इस तरफ की भाषा बोलें, और वो जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वो कुछ और ही लैंग्वेज में वहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है। तो ये एक तीसरा कैटेगरी होता है। कुछ जो परिवार, जो फैमिली जो सीजनल माइग्रेट करती हैं या कहीं कुछ समय के लिए माइग्रेट करती हैं, वो माइग्रेशन भी एक माइग्रेंट पॉपुलेशन भी एक ऐसा है जो जहाँ के बच्चे जो हैं वो थोड़ी दिक्कत महसूस करते हैं। और सबसे ज्यादा जो अगर हम बात करें, जो बहुत सारी बात हो रही है, वरना हमारे क्वेश्चन में भी आया है कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले बच्चे, ऐसे बच्चे जिनको स्कूल के बाहर इंग्लिश का कोई एक्सपोजर नहीं होता है, वो भी इससे काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो ऐसा नहीं है, जो ये धारणा है या मिथ है कि बहुभाषी शिक्षा सिर्फ ट्राइबल बच्चों के लिए होती है या आदिवासी क्षेत्र के बच्चों के लिए होती है। इसमें ये 4-5 कैटेगरीज आती हैं और ये कुल मिला के एक परसेंटेज बढ़ाती बनाती हैं कि लगभग 30% बच्चे ऐसे हैं जो कि अपने घर की भाषा और स्कूल की भाषा अलग होने के कारण उनको दिक्कत होती है। तो एक तो ये मिसकंसेप्शन या मिथ है। दूसरी बात, जब हम करते हैं कि जब भी हम बात करते हैं कि बच्चों को उनकी भाषा में पढ़ाना चाहिए, या जब हम एनईपी और एनसीएफ का हवाला देकर भी कहते हैं कि बच्चों को उनकी भाषा में पढ़ाने का पॉलिसी है, एक एक दिशा निर्देश दिया गया है, तो सबसे बड़ी भ्रांति ये देखने को मिलती है, या कई सारे टीचर्स और कई सारे इवन एजुकेशन ऑफिशियल्स भी ये बोलते हैं कि बच्चे अपनी भाषा तो अच्छी तरीके से सीख के आते हैं, तो उन्हें स्कूल में उनकी भाषा में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, और जो स्कूल की भाषा है उसमें पढ़ाया जाना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके के तीसरा सबसे बड़ा ये होता है कि अगर हम क्लास बच्चों की भाषा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो जो एक टारगेट लैंग्वेज है जिसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी या अंग्रेजी जो भी भाषा है, उसको सीखने में या उसको उसकी दक्षताएं हासिल हासिल करने में जो है वो उनको नहीं कर पाएंगे या उनको देर लगेगी। एक इस तरीके का भी एक धारणा है, एक मिसकंसेप्शन है। और कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि ज्यादातर तो आगे जाके इंग्लिश में ही पढ़ना है या इंग्लिश में ही आपको सारी चीजें करनी है, तो बेहतर है कि आप प्री प्राइमरी या ग्रेड 1 से इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बना दें, शिक्षण का माध्यम बना दें। तो इस तरीके के मिसकंसेप्शन है। और इवन जब हम लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन की ओर से हमने इन 3-4 भ्रांतियों पे एक सर्वे कराया था, तो हमें ये सर्वे में पता चला कि लगभग 19% लोग ये कह रहे हैं या इस बात से सहमत हैं कि बच्चे अपनी घर की भाषा जानते हैं, इसलिए उनको स्कूल में उनकी भाषा में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। और उसमें अगर हम जो पार्शली अग्रीड या आंशिक रूप से सहमत लोगों को जोड़ते हैं, तो वो बढ़कर 39% हो जाता है। तो लगभग
39-40% लोग ये मानते हैं कि बच्चे अपनी भाषा पहले से सीखते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, तो उनको स्कूल में उस भाषा में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। जबकि वास्तविकता इसके बिल्कुल अलग है। वास्तविकता ये है कि जो भी बच्चे बोलते हैं या जानते हैं जिस भी भाषा को, वो एक बोलचाल की भाषा होती है। उसमें जो है वो अच्छी तरीके से अपने आप को कम्युनिकेट कर पाते हैं, उस चीज को समझ पाते हैं। पर जैसे ही हम एकेडमिक लैंग्वेज की बात करते हैं, जैसे ही हम अकादमिक कौशलों की या अकादमिक भाषा की बात करते हैं, तो ये कई सारे रिसर्चेस ने ये शो किया है, इसके एविडेंट रिजल्ट्स हैं कि कोई भी भाषा पे अकादमिक रूप से दक्षता हासिल करने के लिए 5 से 7 साल का समय लगता है। तो ये एक इस धारणा के विपरीत जो है वो इसकी एक वास्तविकता है। दूसरा जो बात होती है कि जो इंग्लिश को लेके जो एक चीज है कि उसको इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बना देना चाहिए। तो यहाँ पे इसकी वास्तविकता इसके ऊपर ये है कि जो लैंग्वेज है वो पहले तो ओरल फॉर्म में ही डेवलप होती है। मतलब कोई भी भाषा अगर आप मौखिक रूप से उसमें मौखिक चीजों को सीखते हैं, देन इट विल हेल्प इन मतलब उसको उसके लिटरेसी की तरफ लेकर जाना, साक्षरता की तरफ उसको लेकर जाना उसको आसान होता है। एक इसी सर्वे में जब हमने बात की थी कि अगर बच्चे अपनी भाषा में सीखेंगे या उनकी भाषा का इस्तेमाल जो है वो क्लासरूम में ज्यादा समय तक होगा, तो जो टारगेट लैंग्वेज है, जो हिंदी है, इंग्लिश है या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, उसकी दक्षताएं वो हासिल नहीं कर पाएंगे। तो ये ऐसे 20% लोग थे हमारे सर्वे में जो निकल कर आया कि वो इस बात से सहमति रखते हैं कि इंग्लिश को जो है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, सॉरी, जो ये कहते हैं कि हिंदी और अंग्रेजी तब नहीं सीखा जा सकता अगर बच्चे की भाषा इस्तेमाल होती है। जबकि हम ये जानते हैं कि भाषाएं जो हैं वो परस्पर एक साथ विकसित होती हैं। वो कुछ इस तरीके का आप जैसे डायग्राम में देख भी पा रहे होंगे कि इस तरीके का जो है वो, आगे चलेंगे प्लीज। या तो आप यहाँ पे देखिए कि जो भाषाएं हैं वो दिमाग में ऐसे दो गुब्बारों की तरह नहीं होती है कि L1 का गुब्बारा अगर बड़ा हो गया तो L2 का गुब्बारा छोटा हो जाएगा। वो बेसिकली इस तरीके से होता है कि L1 और L2 दोनों एक साथ डेवलप होते हैं माइंड के अंदर। और कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे जैसे हम बात करते हैं कि जो अवधारणाएं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो रीडिंग राइटिंग के स्किल्स हैं, या अगर एकेडमिकली जिस तरीके से सोचा जाता है या उस पर विचार किया जाता है, या जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं, वो सब कुछ जो है वो ट्रांसफर हो जाता है आपका L1 से L2 में। और जो कुछ जो जो नए कौशल सीखने पड़ते हैं वो दरअसल कुछ शब्दावलियां होती हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर या वाक्य संरचना जिसको हम बोलते हैं वो होता है। और एक जो है वो लहजा होता है, जो एक्सेंट जिसको हम बोलते हैं, उस भाषा को बोलने का, वो जो है वो भाषा दर भाषा जो है वो बदलती रहती है। तो ये जो इस तरीके के 3-4 धारणाएं हैं या जो मिथ्स हैं, ये बेसिकली बहुत ज्यादा हावी रहते हैं जब भी हम बात करते हैं किसी टीचर ट्रेनिंग में या किसी भी एजुकेशन ऑफिशियल के साथ। तो ये धारणाओं पे भी बातचीत करना और इनकी वास्तविकताओं से परिचित कराना बहुत ज्यादा जरूरी लगता है। इसी के अगेंस्ट में जब हम बात करते हैं कि हमारा हमारा ट्रेनिंग किस तरीके से होना चाहिए या कैसा होना चाहिए, तो ये जो चार एक मोटे बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं कि एक तो टीचर ट्रेनिंग के दौरान इस बात के ऊपर एक्सेप्टेंस बिल्ड करना कि टीचिंग लर्निंग में या सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जो है वो बच्चों की परिचित भाषा का उपयोग होना चाहिए, इसको बिल्ड करना, इस एक्सेप्टेंस को। दूसरा, जब हम बात करते हैं मल्टीलिंगुअल एजुकेशन की या जब हम बात करते हैं बच्चों के भाषा को क्लासरूम में लाने की, तो सिर्फ वो भाषा नहीं होती है, वो बच्चे का अपना परिवेश भी होता है, उसकी अपनी संस्कृति भी होती है। तो उसको किस तरीके से जो नॉलेज है, जो उसके कम्युनिटी का नॉलेज है, जो कॉन्टेक्स्ट है, जो कल्चर है, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए या उसका क्या महत्व है बच्चे के सीखने में, इस पार्ट पे भी काफी ज्यादा ध्यान दिया जाना जरूरी होता है। और जैसे मैंने पहले कहा कि जो मिथ्स हैं लैंग्वेज लर्निंग को लेकर या मल्टीलिंगुअल एजुकेशन को लेकर, उस पर बातचीत किया जाना टीचर ट्रेनिंग के दौरान जरूरी लगता है।
और सिमिलरली जो हमारे थियरीज हैं या जो हमारे प्रिंसिपल हैं मल्टीलिंगुअल एजुकेशन को लेकर या दूसरी भाषा सीखने को लेकर, दूसरी भाषा सीखी कैसे जाती है, उसके क्या कंपोनेंट होते हैं, तो ये जो 4 चीजें हैं ये जरूरी लगता है कि जब हम टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं या टीचर्स की के ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं, तो एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल होना चाहिए उस ट्रेनिंग का। तभी जो है वो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन की जो पूरा वाई है, जो क्यों बहुभाषी शिक्षा, क्या बहुभाषी शिक्षा, इस पे जब पूरे तरीके से बात होती है तो ये चीजें इम्पोर्टेंट लगती हैं। सो थैंक यू। मैं अभी इतना ही, आगे अनुभव को मैं हैंड ओवर करती हूँ। थैंक यू। Thank you. I think in the last sort of in this since the last 20-30 minutes, we have been sort of established the current trends in teacher training, how teacher training should look like, what are the issues that teacher training needs to address, right? The self-identified needs that are coming from teachers, the critical language awareness that happens, the sort of the emotional and social understanding of the children's context, of children's lives, etc., etc., as well as all the myths and misconceptions that happen that are found in happenstance across the language situations in India, right? So now, sort of, if we look at all of these things in a larger context and sort of say, okay, all of these things are there, all of these trends are there, or this knowledge body is there. So how can we, when teacher training programs happen, how can we encourage teachers or any group of teachers to sort of reflect on their teaching practices and adopt appropriate strategies in relation to all of this? Because it's a different thing to say, okay, that there are these kind of challenges that are happening, and it's easy to say also that, okay, these are the challenges, etc., happening. But when those challenges have been identified and that there are these kind of challenges and these are the solutions towards the challenges, when teacher training programs happen and they are geared towards creating awareness of teachers regarding the critical language awareness, or regarding the multilingual approach and why it should be adopted and what research says what, etc., how do we sort of go towards encouraging them to reflect and adopt these strategies? Yeah, are there any challenges in where we face when we sort of ask them to reflect and adopt these strategies? Yeah, if anybody would like to take up the question. In between, we lost you sometime. So that's yeah. what. First you were frozen, then we lost you. Can you Yeah, say it quickly that? Sorry. yes, I'm sorry. So essentially, the essence of the question is, how can any group of teachers be sort of encouraged to reflect on their teaching practices and adopt appropriate strategies in the context of all of these that we've just discussed? And if there are any challenges that we face when we encourage teachers to reflect on it. Yes. Should I? Yeah, you can take it, and then All right. anybody else can jump in. Yes. Since we are involved in service teacher training, and particularly the foundational stage is now in a big way. We also conduct online as well as face-to-face training programs. We have looked at the teachers are now recognizing that multilingualism is a reality and it needs to be taken forward. Languages of children are important. It should be essential to have an understanding of developing the first language first. That's the mother tongue or the languages of children. This is one. But at the same time, what teachers are looking forward to is give me some strategies which will work in my classroom. So, okay, for example, I wrote one of the questions, where will teachers look forward to resources? So why should a teacher look forward to resources always, particularly in languages? In languages, we do NCRT has a lot of Jadu Vipitara, many things, science kits, language kits, many things. But I'm saying, so for example, I need to teach vocabulary, let us say the words and word chunks. So let me take the word home or class or school. So let me draw a kind of circle and put it, this is the theme. So let children find words relating to home, whichever the word given.
then you write it in your language, say it in your language and in English or whichever language is available. This also promotes. So enabling the teacher to gain confidence first in understanding pedagogy, not necessarily in that designer pedagogies, in say, so this is the way children learn. My children learn this way, and there. This is not the way children learn. For example, let me not introduce letters of the alphabet first. Let me introduce. Let children notice languages. This reflection has to come. That you rightly said. That's what the sensitivity, critical language awareness that we call it. Whatever the thing. So I am a teacher. I have a prescribed textbook for some languages. Some I need to develop. Then children need to make use of the languages. If I devise my own strategies, enabling children to recite, summarize and say something, or write the words and word chunks, even not understanding fully, they're able to decode, then connecting from decoding to reading with the comprehension understanding. So I think that is the thing we need to instill in the teacher, both in pre-service as well as in service. Of course, the teacher learning as community practices, which has been now talked about. And can we have groups for everything nowadays, WhatsApp or online groups, but we need to have teacher group working together, at least in one school or many schools. I think why English language teacher education, English language teachers association, there are many associations. One is English Language Teachers Association of India, ELTA we call it. They hold a conference every year. You can see 5,000 teachers gather. So in that case, bringing the teachers together in order to create materials and share and care about language learning, and particularly multilingual language learning. And we need to sensitize teachers in the language situations where more than 3-4 languages exist. Multi actual in the real sense, multilingualism, multi languages exist, so that teachers said that I'm doing this. So it works for English language teaching, it works for Hindi language teaching. Why not it work for other languages? Because languages at one level are the same. And the whatever Smriti has now shown about these bubbles. So let teachers understand that. Then so in that case, I would say the knowledge of pedagogies are important. There are people like Alistair Pennycook, he claims that no particular method is sacrosanct, but at the same time, it's mandatory on the part of the teacher to understand how children learn languages. That is the various methodologies, whether it is designer methodologies, whether we say behaviorism or cognitivism or now constructivism or post-constructivist pedagogies are coming out. So let them have that knowledge. That is very important. If through our training we sensitize whether it is alien or native pedagogies, so let children, teachers have that knowledge of it, then come to an understanding of what to say, what N.S. Prabhu call it, the second language pedagogy, sense of plausibility. Whatever is plausible in my classroom, and using a kind of eclectic approach, means whatever works. Sometimes I can ask my children to simply memorize with of course with understanding, which is now denounced, but if it works, let it work. So that sensitivity is important on the part of the teacher. I have answered many of the questions this one by writing. I think that others also should answer. Please. Yeah, thank you. Thank you so much. Yashwinder ji, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? So before moving to this question, I just want to add to what Smriti was saying. तो एक बड़ा इशू जो है वो है एक शब्द है जिसने पूरे देश दुनिया को ना बदल के रखा हुआ है. वो शब्द है मेन स्ट्रीमिंग. So who defines that? What is the mainstream? No, अभी हम अंग्रेजी में भी बात कर रहे हैं, अभी हम हिंदी में भी बात कर रहे हैं. हो सकता है कुछ लोग इसके कुछ इंटरप्रिटेशन निकालें, है ना. तो किसी का भी मेन स्ट्रीम होना, जब उस पर प्रेशर बनता है, तो वो बाय डिफॉल्ट ही और शी वांट हिज और हर चाइल्ड टू गेट इनटू द मेन स्ट्रीम एज अर्ली एज पॉसिबल. नो, जैसे ही किसी भी खास तबके में जो बच्चे अभी स्कूल जाते हैं, जिस तबके के, उनमें जैसे ही थोड़ा सा फाइनेंशियल ग्रोथ होता है, वो प्राइवेट स्कूल्स में जंप कर जाते हैं.
क्यों? क्योंकि उनके ऊपर वो जो पूरा मेन स्ट्रीमिंग का प्रेशर रहता है कि हमारे बच्चों के साथ वैसा कुछ ना हो जो हमारे साथ होता है ना। मैं उससे हटता हूँ, इस बात पे आता हूँ जिस पे आप बात कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि टीचर ट्रेनिंग के ऊपर जो मेघनाथन जी ने बोला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम देखें तो जिस तरीके से हम अपने इस प्रोजेक्ट में चीजों को देख रहे हैं, मैं वहां से थोड़े से एग्जांपल्स लाना चाहूंगा। इंडिया पार्टनरशिप फॉर अर्ली लर्निंग जो केयर और केपीएमजी के द्वारा चलाया जा रहा है, यूएसएड से प्रायोजित है ये। तो इसमें अगर हम देखें तो इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग में कैसे केस स्टडीज का इस्तेमाल किया जाए, ऐसी केस स्टडी जो बच्चे की भाषा से रिलेटेड हो, ताकि टीचर उससे अपने आप को रिलेट कर पाए। कई टीचर नहीं भी करते, कई टीचर्स को लगता है हमारा कॉन्टेक्स्ट नहीं है। चलिए, आपका कॉन्टेक्स्ट नहीं है, पर बीइंग अ प्रोफेशनल ऐसा तो कभी नहीं होगा कि आप हमेशा एक ही जगह रहेंगे, आप कहीं और भी जाएंगे जहां आपके सामने ये सिचुएशन हो सकती है। या बीइंग अ प्रोफेशनल, क्या आपके लिए जरूरी नहीं है समझना कि किसी ऐसी सिचुएशन को आपको डील करना पड़े तो आप क्या करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है केस स्टडी का जो तरीका निकल के आता है। दूसरा मेरे को लगता है कि कैसे इन सर्विस के दौरान टीचर टीचर की भाषा को ज्यादा समझे। मेरे को लगता है कि सरल भाषा वो होती है जो हम अपनों से सुनते हैं, नहीं तो मैं तो बीइंग अ पेडागॉग मैं बहुत सारी चीजों को उनको समझा सकता हूँ, लेकिन क्या वाकई में जिस अपेक्षा के साथ टीचर किसी ट्रेनिंग में आते हैं उनका सिंपल सा सवाल होता है कैसे। वो तो हम सब समझ लेंगे कि आपने जो बताया कि अच्छा मैथ्स में आप ईएलपीएस करेंगे, इसमें आप एलएसआरडब्ल्यू करेंगे, तो हमने बहुत सालों से रट लिया है। लेकिन आप बताइए कि ये जो सिचुएशन है इसको डील करने का तरीका क्या है। आप आइए, आप जरा सोचिए कि एक 40 बच्चों की क्लास जिसमें 6 तरह की लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं, अब बात करते हैं। तो मेरे को लगता है ये जो रियल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं, इनके साथ हमको इन सर्विस में ज्यादा से ज्यादा आना होगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको कि इन सर्विस में जबरदस्ती इंक्लूड नहीं कर सकते, तो उनके लिए हमको आईसीटी के सपोर्ट लेने पड़ेंगे। तो आईसीटी जब मैं बोल रहा हूँ तो ऑनलाइन कोर्स भी आईसीटी का एक हिस्सा है ना, जहां पर कि ऑनलाइन टीचर के पास मौके हो, वो थ्योरीज को भी समझे, वो उन चीजों को रिफ्लेक्ट करे, है ना, और वो भी हाइब्रिड मोड में चल सकते हैं। तो इन सर्विस में इन दो चीजों को देखना, वेबिनार्स को इंक्लूड करना, जो कि अगेन जो आप टीचर्स के साथ काम कर रहे हैं उससे निकल के आने वाले इश्यूज को कैटर करता हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा मेरे को लगता है रिसोर्सेज को अगर हम देखें तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो 2000 मतलब 19 के जो हमारा कोविड का पेंडेमिक था उसके तुरंत बाद का प्रोजेक्ट था, और 2019 के पेंडेमिक के बाद जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो झारखंड में हमने कोशिश करी कि कैसे एक तो ये पेंडेमिक से निकले हुए बच्चों के लिए कैसे करिकुलम को देखा जाए, और उसमें भी उनकी भाषाओं को कैटर करने की अगर जरूरत पड़ेगी तो किसी टीचर को कैसे सशक्त करें। तो आप देखेंगे कि जो भी हैंडबुक बनी है टीचर के लिए उसमें उनको एक ग्लॉसरी दी गई, एक पीछे आराम से शब्दावलियां दी गई जो उनको अलग अलग भाषा में किसी एक शब्द को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी भाषा आपके क्लासरूम में एग्जिस्ट करती है, कम से कम उन शब्दों को तो आप इस्तेमाल करना शुरू करें ताकि बच्चे आपसे कनेक्ट करें। तो ये एक इस तरीके के प्रयास हैं। चिल्ड्रन लिटरेचर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अभी चिल्ड्रन लिटरेचर को अगर आप देखें तो कैसे आप कुछ कहानियां उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट से निकल के आती है, चाहे वो बागड़ की कहानी हो, चाहे वो रुगड़ा की कहानी हो, चाहे उनके अपने कॉन्टेक्स्ट में कुछ चीजें आती हैं। तो वो जब चीजें बच्चों के सामने आती है, बच्चे उससे लिंक करते हैं, रिलेट करते हैं, और जब वो रिलेशन यहाँ से होता है ना दिल से, तो वो जल्दी सीखना होता है। मुझे जब तक पता लगेगा कि अच्छा यार मेरे ही पहाड़ है, मेरे ही लोग हैं, मेरी ही बात हो रही है, तो मैं उसको जल्दी पकड़ूंगा, है ना। तो वो एक जो रिसोर्स का एक पूरा मामला आता है उसको हम देख रहे थे। साथ ही साथ मेरे को लगता है आईसीटी में ऑडियो स्टोरीज आर अ गुड ऑप्शन। वी आर ट्राइंग दैट एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट। सो ऑडियो स्टोरीज बहुत मदद करती है अगर टीचर क्लासरूम में उनको ढंग से इस्तेमाल कर पाए। अगर उनको लैंग्वेज कम आती है तो भी कैसे वो उससे अपने आप को इक्विप कर ले पाए। तो वो एक हिस्सा है जहां पर कि हम लोग अभी काम कर रहे हैं लगातार। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें और भी हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं, लेकिन अगेन मुद्दा ये है कि हमारी विल और हमारे प्रयास किस ओर है ना, कितने अलाइंड है, कितना हम
मैं अगेन मेरा देखिए मेरा पूरा फोकस ज्यादा जा रहा है आंगनवाड़ी की तरफ, क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा अभी जरूरत मेरे को दिखती है, क्योंकि वहीं पर अभी सबसे ज्यादा गैप है। एक दोषारोपण का जो तरीका होता है ना, कि कोई कहे कि इन्हों के कारण, कोई कहे इनके कारण, तो वो आखिर में आंगनवाड़ी पे आके रुक जाता है। तो उन पे ना रुके, उनकी कोई गलती नहीं है कि उनको अगर ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, तो उनके ऊपर थोड़ा सा हम काम करें, उन बच्चों के लिए हम थोड़ा सोचें और उसके ऊपर काम करें। इसमें एक महत्वपूर्ण बात और छूट गई मेरे से, वो है कम्युनिटी कनेक्ट। हम लोगों ने पिछले कई सालों में जो हमारी स्ट्रेंथ हुआ करती थी, वो हमारी आज की वीकनेस बन गई है। कम्युनिटी जो कि स्कूल के शिक्षण का हिस्सा हुआ करती थी, वो आज बाहर है। कैसे कम्युनिटी से हम बच्चों को कनेक्ट करें, कैसे हम कम्युनिटी में एक अच्छे स्टोरी टेलर्स को आइडेंटिफाई करें, कैसे हम कम्युनिटी में काम करने वालों को कनेक्ट करें ताकि वो स्कूल में आए और बच्चे उनको सुने। दो फायदे, एक, बच्चों को अपने लोगों से सुनने में उनकी अपनी एक कला होती है, अपना तरीका होता है सुनाने का, खासकर जो बूढ़े लोग होंगे वो तो और भी अच्छे तरीके से सुनाएंगे। लेकिन उसके अलावा दूसरी बात ये कि बच्चों के मन में अपने पेरेंट्स, अपनी कम्युनिटी, अपने तरीके के कामों के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ती है। अदरवाइज उनको लगता है कि ये जो काम करते हैं ना हम लोग, ये काम ठीक काम नहीं होता। तो अच्छा काम, बुरा काम, गंदा काम, छोटा काम, बड़ा काम, ये जो पूरी धारणाएं हैं, इनको हमको बचपन से ही तोड़ने की तरफ को बढ़ना होगा और ऐसी चीजों को हमको इंक्लूड करना होगा। कम्युनिटी कनेक्ट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। थैंक यू। Yeah. Let me answer that one question. It should be answered live. I think how Yes, can we yeah. reduce the challenge of local dialect in language learning as students? So first of all, Ananya a foundation. Somebody has asked it. Okay. First of all, with my understanding. So how do you define dialect? Everybody's question. Professor Agnihotri also asked, and Professor Ajit Mohan, many people, and as practitioners, we also know. So there are two. One, of course, there are dialects. Hindi has many dialects as the language is spread. I am a Tamil speaker. Let me tell you, Coimbatore dialect and Chennai dialect. So this Coimbatore dialect and Chennai dialect can be mutually understood, comprehensible. So then it is the dialects of the language. But if you mean that local dialect is different from Hindi or the English, of course English, so then it's a language. So let us recognize that it's a language. That language has to be made use in the classroom in order to make children be comfortable and learn the language. So that is a mother tongue of a section of children, or some children, or the whole class, that needs to be understood. So another thing is the dialect language what's that wall is now breaking. So if it's a formal language or a particular set of social or community aspect, then it's a language, and otherwise it's a dialect. But that is a misnomer. So let us come out of the dialect language, what's it, denomination, or whatever we call it, discretion. So let children, as we learn languages, there is something called inter-language period, which everybody knows. That I started learning a language till I attend a level of proficiency, confidently speaking, using the language. That period is inter-language period. Errors are common, then some slips are common in that. So let us recognize. I always say that errors are treasures in language learning in order to notice. But children have to notice it, kind of meta understanding, reflect on it. That's what. So thank you. That I think the dialect thing need not be a worry. It is a merit rather than a problem. So yeah, fine. That's a question. Let me read out if anyone can answer. If the teacher knows the home language of the children, then multilingual education will be implemented well in the classroom. But is any kind of policy change being considered regarding teacher recruitment at the national level? Anybody? If no one is reflecting, please. Please. Actually, इस क्वेश्चन पे मैं जितना सोच पा रही हूँ, दैट इज लाइक कि ये एक एक ये बेसिकली इस तरीके की बात है कि जब हम एजुकेशन को देखते हैं ना, तो इट इज इन कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द
लिस्ट, लाइक आई थिंक, मतलब एजुकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है। एंड यस, इफ स्टेट वांट्स कि उनको इस तरीके के पॉलिसीज पे काम करना चाहिए, सो आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्टेट गवर्नमेंट्स, बिकॉज जब हम ये बात करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि जैसे अभी लैंग्वेज मैपिंग के थ्रू स्टेट ने अपने पूरे स्टेट का एक पूरी संरचना समझ ली है कि कहाँ पे क्या भाषाएं बोलने वाले बच्चे हैं, कहाँ पे क्या भाषाएं बोलने वाले टीचर हैं। तो यस, ये एक बहुत जरूरी मुद्दा हो जाता है कि किस तरीके से टीचर रिक्रूटमेंट पॉलिसीज को देखें। बट अगेन, इट इज द विलिंगनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और द कि वो किस तरीके से टीचर रिक्रूटमेंट को देखते हैं। बट अगेन, आई वुड एम्फेसाइज कि भाषा सीखना जो है वो बहुत ज्यादा कठिन नहीं होता है। जब हम ओरल लैंग्वेज की बात करते हैं, कई सारे टीचर होते हैं जो किसी 15 साल 20 साल काम कर रहे होते हैं। तो उस 15 साल 20 साल में अगर लैंग्वेज लर्निंग का विलिंगनेस है टीचर के पास, और अगर वो चाहते हैं या उनको उसकी नीड महसूस होती है कि उनको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उस भाषा को जानना जरूरी है, तो आई थिंक दे कैन लर्न वेरी वेल चिल्ड्रंस लैंग्वेज। तो सारी कुछ जो बातचीत आती है कि टीचर एक की रोल प्ले करता है जब हम बच्चों के लैंग्वेजेस को क्लासरूम में लाने की बात करते हैं। और ऑफ कोर्स जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है या जो भी किसी तरीके की भी पॉलिसी है रिक्रूटमेंट से या डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड, इस पे बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सोच सकते हैं, उस पर बात कर सकते हैं और वो अपने आप पे चेंजेस कर सकते हैं। तो अगर एक पॉलिसी बनती है स्टेट लेवल की, लाइक उड़ीसा में बनी है एमएलई पॉलिसी, उसमें कई सारी चीजें हैं जो कि वो कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट होती हैं। तो यस, मुझे ऐसा ही लगता है। एंड आई कैन रिक्वेस्ट यशवेंद्र जी एंड मेघनादन जी टू pick it up. There is a question about this centrally conducted recruitment system like CTET and all. And of course, it is now conducted in, I think, 13 or 17 languages. I am also part of it in with the CBSC. It has aspects of multilingualism in testing. And there's a question, for example, not recently, over the years, Arunachal has brought in almost, I think, and there are pockets where more than 5-6 teacher to know all the languages. But the pedagogical processes which accommodates, which allows children to make use of the languages in order to learn the languages. Making use is one, means I am allowed to speak in the language and so on. But also learn the languages as others learn the majority language is a challenge. That is the pedagogy LLF is working and NCERT is working for. So then more than that, the teacher, I gave the example of this vocabulary. So, and making the language explicit, making the language available in the classroom in the written form, whichever the script, the language is written, that is one thing. Of course, teacher recruitment, the states have their own tests. And as far as possible, primary teachers are appointed from the same locale, and they at least know the language. If not knowing all the languages, they know about the languages and the linguistic profile there. So that is a major challenge, of course. And some other things, centrally recruitment happening, centrally administered test happening in for other things like medical admission, engineering admission. That is to ensure quality and streamlined process. That's all. Yeah. All right. Yeah. I think because the session because the session was so long and there were a lot of questions coming in between, I think we had a dedicated session for Q&A, but most of the questions seem to be answered. So I think that's that sort of signifies like how engaging the whole panelists have been with the audience, and the audience as well have been parlaying with the panelists in the chat function. I think there are two more questions which still remain unanswered. I think we can take those two questions and then we can sort of move towards closing the webinar as it's already 5:30. So the first question, Ms. Dixika Pale's question I have answered that. Then Yes, the other one, how can the long-term sustainability?
So very clear everything. One is the political will, funding, and community commitment. If my language has to survive, my community has to come forward. For example, let me give the example of Tamil Nadu, that language activism. Recently, a researcher said that their language identity, connectivity, and all have benefited the language. I'm not saying it's right or wrong is a political act. Let's not take the political correctness, but however, whichever, for example, on the official language day, the way Home Minister said that how Hindi can be a supplementary, complementary language, that we are aiming at kind of, no, it is official language and also has a pan-Indian status, how to promote that. So same way, sensitivity needs to come from the communities also. And of course, the state has to, I would say that very radically, why should we recognize a language? Why 22 languages are recognized? If a language is there, it has to be recognized. But it's a big country, 121 languages are recognized, and 234 languages are mother tongues. So a lot of things we play around for our convenience, administration, management, political correctness. But sustainability, Language Learning Foundation has shown working with the states, and NCRT also is working, needs to work more on that. That's the thing. Yeah. Thank you very much. Thank you. Yeah, Ishwendra ji wanted to say something. तो मुझे लगता है कि सस्टेनेबिलिटी लाइज इन डिसेंट्रलिटी. डिसेंट्रलाइजेशन ही एकमात्र उपाय है. हमको ज्यादा से ज्यादा भरोसा डिसेंट्रलाइज एफर्ट्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे तब तक वो जो लोकल नीड्स हैं तब तक वो कैटर होने की संभावना कम रहेगी. सेंट्रली दे कुड बी सम गाइडलाइंस, सम प्रोटोटाइप्स, बट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट it has to be decentralized because that's the need of the hour. Secondly, मुझे ये भी लगता है कि कई बार इससे पहले वाला जो सवाल था टीचर रिक्रूटमेंट को लेकर, मुझे लगता है उस पर बहुत सोचने की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि कई बार कुछ स्टेट्स इसके 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 इसकी ढाल बनाकर कुछ अपने राजनीतिक मुद्दों को भी पुश कर लेते हैं और पैरा टीचर जैसा एक आइडिया ले आते हैं, जो कि ट्रेंड नहीं हो पाते, जिनके साथ आप जस्टिस नहीं कर पाते, जिनको आप फाइनेंशियली आप उनको मदद नहीं कर पाते, तो उस तरह के बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं. तो रिक्रूटमेंट एंड ट्रांसफर, आई सेड earlier in my talk that these are the two critical but highly political issues. तो मेरे को लगता है कि सस्टेनेबिलिटी में डिसेंट्रलाइजेशन, कम्युनिटी कनेक्ट एंड द ओनरशिप ऑफ द टीचर एंड द इंस्टीट्यूशंस देयर, राइट, तो वो ही इसको आगे बढ़ा सकता है. सो थैंक यू सो मच. इतना ही बोलूंगा. Thank you. I think thank you to I think it was a question by Ansar Riaj. No, sorry, Aryan, because that serves as a very good closing question where we're sort of looking forward into questions of sustainability of these teaching training programs. And so we had some closing remarks by Professor Meghnadhan on what needs to be done, the community engagement that needs to happen for those kind of sustainability, as well as this sort of the focus that should be on decentralization based energy. Final concluding remark, if you want to add anything, Smriti, and then think. Yeah. Yeah, so I agree with Meghnadhan ji and Yashwendra ji, because जब भी शिक्षा में बच्चों की भाषा के इंक्लूजन की बात आती है, तो ये 2-3 चीजें जो इन्होंने बताई हैं, फॉर एग्जांपल कि डिसेंट्रलाइजेशन, हमारे डाइट्स जो हैं वो स्ट्रेंथन होने चाहिए, हमारे जो टीचर हैं उनको अपने बच्चों के हिसाब से उनकी नीड समझ में आनी चाहिए कि वो किस तरीके के रिसोर्सेस अपने क्लासरूम में इस्तेमाल कर सकते हैं. और जो कम्युनिटी के साथ जो एक पूरा, जब सरकारी विद्यालयों की जो संकल्पना की गई थी उस दौरान जब बात की गई थी कि समुदाय और स्कूल का जो जुड़ाव है वो अगर उस पे काम होता है और उसको बना के रखा जाता है, समुदाय का जो है टीचर पे ट्रस्ट जो हम देख पा रहे हैं कि आज के दिनों में थोड़ा सा कम होता जा रहा है, उसके अपने अलग रीजंस हैं. तो जब स्कूल और समुदाय का, कम्युनिटी का जब जुड़ाव होता है, तो आई थिंक ये सारी चीजें जो है वो हैंडल की जा सकती हैं और हम बच्चे का सीखना जो है वो सुनिश्चित कर सकते हैं. तो थैंक यू सो मच Arnav, and thank you Meghnadhan ji and Yashwendra ji. Let me also thank all
the co-panelists and Arnav. Thank you very much. Thank you. Yeah. So I was saying with this very hopeful sort of outlook towards sustainability of these programs, I thank all of you so for your wonderful insights that you were there, and also the sort of the audience as well for the curious questions that they pose, and the constant engagement that was happening over chat between the panelists and the sort of the audience, right? So we thank you from the bottom of our hearts, and we look forward to again to meeting you with some of the questions and the learnings that we take from this session. We'll share a feedback form with all of the participants, where if there are any further questions that you would like to be addressed, you can post them to us, as well as you could provide feedback on how the webinar happened. So that's it. Thank you so much for attending. Thank you so much for actively participating and actively listening. Thank you so have a much. great evening. Yeah, thank you. Have a great evening ahead and a national holiday tomorrow. Thank you. Thank you. Thank you very much.